Namaste, hello to all of you. Today we are going to study Hornbill chapter, the portrait of a lady, chapter 1 of this chapter. And also I want to tell you that this is my first video. So if you want to study some other chapter and some other subject of class 11th and other classes, so you can give me on comment. Okay, let's start. So, the first chapter, the portrait of a lady, a chapter of Hornwell. This is the first chapter. The writer is Kushwant Singh, and there are some important points over there. So, okay, let's start reading. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty, and had even a husband, even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of the chest and looked at least 100 years old. Okay, let us see. Look at the explanation of this paragraph. Okay, here what is he saying? A narrator is saying that his grandmother, like everybody's grandmother, मतलब वो कहना चाह रहा है कि उसकी जो दादी माँ थी, हर किसी की दादी माँ की तरह एक ओल्ड बूढ़ी औरत थी, जो कि बूढ़ी और जिनकी चेहरियों पर झुर्रियाँ थीं 20 सालों से, जब से जो वो उन्हें जानता था। लोग कहते थे कि वो कुछ समय पहले बहुत ही सुंदर यंग रह चुकी हैं, और उनके पास मीन्स उनको उनकी शादी भी हुई थी और उन पे एक हस्बैंड था। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव। उसे ये विश्वास नहीं कर पा रहा था, वो बिलीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पोर्ट्रेट देख के ये सब कुछ बिलीव नहीं था। माई ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट हंग above the mantelpiece in the drawing room. Now he's saying, what is he saying? His grandmother's portrait was hung above the mantelpiece. मेंटल पीस के ऊपर जो कि लटका हुआ था उसके ड्राइंग रूम में, उसकी पोर्ट्रेट उसकी ग्रैंडमदर का। ही वोर सॉरी सॉरी उसके ग्रैंडफादर का फोटो। उस उनने पहना हुआ था, एक लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए थे। लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी जो दाढ़ी थी उनने उनकी चेस्ट को कवर कर रखा था पोर्ट्रेट में। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर, वो कि 100 साल के लग रहे थे। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव वाइफ और चिल्ड्रन। अब वो बताना चाह रहा है कि वो देखने से ऐसे नहीं लग रहे थे कि उनके पास उन पे एक वाइफ और चिल्ड्रन है, बच्चे हैं। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उसकी फ़ोटो से सिर्फ यही पता लग रहा था कि उसके पास बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि जो चिल्ड्रन के चिल्ड्रन। एज फॉर माई ग्रैंड फादर बींग ए यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। Now narrator is going to say, means he want to say that जो उसका थॉट था, जो कि उसके ग्रैंड मदर बीइंग ए यंग एंड प्रेटी वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, मीन्स वो उसके दिमाग में बैठ नहीं पा रही थी बात। कहीं ना कहीं दिमाग में लड़ रही थी कि ऐसा हो सकता था या नहीं। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like fables of the prophets. She used to tell us she had always been short,
fat and slightly bent. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. Okay, so we are going to explain this. Well, let me explain this. उनने पहले बता दिया था कि जो बताया था मीन्स जो वो अक्सर बताया करती थी, नरेटर कह रहा है ये कि वो बच्चों की तरह खेलती थी, डेट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड जो कि कुछ मीन्स जो कि कॉमन नहीं लगती थी, जो बातें अनयूजुअल जो होती हैं, जो नॉर्मली नहीं हो पाती हैं बातें, ऐसा लगता था नरेटर को वो ऑन हर पार्ट ऑफ ट्रीटेड it like a fables on perhaps used to tell us. Okay, so and and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. मीन्स हम वो नरेटर कहना चाह रहा है कि वो भी ट्रीट करते थे उन्हें उसी तरीके से, लाइक फेबल्स ऑफ द प्रोहेब्स सी यूज टू टेल अस, जो कि वो बताया करती थी उसी तरीके से, मीन्स वो भी उन्हें ट्रीट करते थे, से वो खिला करती थी. ओके, नाउ दिस लेट्स गो अहेड. ओके, नाउ this was a one first part of this video. Now we are going to have a uh, second part of this video. Okay, so if you have some doubts, so comment me, and if you like this video, so give the thumbs up and share this video also. Thanks for watching. Thank you. Visit again. Okay, thanks. Visit again.